नमस्कार दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर उसे कड़ी चेतावनी दी। थरूर ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की आदत रही है कि वह किसी भी आतंकी हमले से तब तक इनकार करता है जब तक उसे रंगे हाथों पकड़ा न जाए। कार्यक्रम के दौरान एक बेहद रोचक पल तब सामने आया जब शशि थरूर से सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के बेटे थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी देश ने भारत से यह पूछा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के क्या सबूत हैं? और जब पाकिस्तान बार बार इनकार करता रहा तो भारत की प्रतिक्रिया क्या रही? इस पर थरूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने यह सवाल खुद प्लांट नहीं किया है, मैं वादा करता हूं। थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी देश ने भारत से सबूत की मांग नहीं की, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने जरूर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत कभी भी बिना पुख्ता सबूत के पाकिस्तान जैसे देश पर आरोप नहीं लगाता। हमारे पास ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिन्हें न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा किया गया है बल्कि उन पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। थरूर ने इस चर्चा में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करते हुए 3 अहम बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया। पहला, उन्होंने कहा कि पिछले 37 वर्षों में पाकिस्तान ने बार बार भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश की है और हर बार किसी न किसी तरह इनकार करता रहा। जब तक आतंकवादी रंगे हाथों पकड़े ना जाएं, पाकिस्तान खुद को निर्दोष बताता रहता है। दूसरा, उन्होंने अमेरिका को सीधे तौर पर याद दिलाया कि उसे भी नहीं भूलना चाहिए कि अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सैन्य ठिकाने के पास आराम से छिपा हुआ था और तब भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से यह सच्चाई छिपाई थी। और तीसरा, थरूर ने यह कहा कि भारत की नीति हमेशा तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित रही है। जब भी भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं वो महज राजनीतिक बयान नहीं बल्कि ठोस सबूतों के साथ थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की आतंकवाद पर दोहरी नीति को फिर से उजागर कर दिया है। शशि थरूर का यह बयान भारत की कूटनीतिक स्थिति को न केवल मजबूत करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीरता से बात करता है। थरूर के बयान के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर किस तरह का रुख अपनाता है। Do you expect Pakistan to do the same thing again? And if so, what did Operation Sindoor achieve? I think it achieved the signaling of a very firm resolve. And we are saying this to our interlocutors in other countries as well, which is that if Pakistan leaves us alone, we're very happy to leave them alone. But if they allow this to happen again, or they actually instigate it and direct it, as this one seemed to have been, they will be hit back. We will hit back very hard. And the fact is that this nuclear bogey being waved around by the Pakistanis makes absolutely no sense because even what happened in Operation Sindoor stopped a long way short of anything then approaching what would be considered a nuclear threshold. We're not here to blow up the countries or the world or whatever. We're here to just say, do not take our patience for granted. There have been far too many terrorist attacks. We have responded with superhuman restraint, and I'm afraid with Operation Sindoor we've signaled the gloves are off. Even then we did so very responsibly. I draw your attention to the fact that our strikes on the 7th of May, the night of the 6th, 7th of May, only targeted known terrorist bases and headquarters of organizations listed on the State Department's terror designate list, as well as on the UN committee's list of terrorist organizations, proscribed terrorist organizations. We very carefully did this at 1 o'clock at night, 1:05 to 1:30, to ensure that risk of civilians being around in case anything went astray was minimal, so there would be no collateral damage, and we are confident there was none. There was no collateral damage. In one particular case, we were able to see that we were able to strike the very precise building we aimed at inside a larger campus of one of these terror groups. So we believe we did this extremely correctly, and we signaled to the world and to Pakistan that we were deliberately avoiding any Pakistan government installation, any civilian facility, and even any military facility. So the message was very clear. This is not the opening salvo in what's intended to be a protracted war.
This is just retribution against terrorism, and it's going to stop right there. If you stop, we stop. If you start, we reply. And that's exactly what transpired over the next 88 hours. Their actions invited retribution again. The moment their Director General of Military Operations called ours on the 10th of May and said, let's call it off, we said fine. We had never intended to prolong it. So that is the short answer. As far as as your concerns about Pakistan are concerned, we recognize that the facilities we've destroyed can be rebuilt in 6 to 9 months. And we recognize that if Pakistan has no will to dismantle the terror infrastructure, that it'll be there and primed and ready to use again. What we're hoping is that Pakistan sees that this didn't do them a whole lot of good, and that it might be, in fact, it did the army the short-term good of being able to tell their people that they're once again the saviors of their nation, which is probably one of the main motives behind this attack in the first place. But the people of Pakistan, with whom we have no quarrel, should understand that India has absolutely no interest in going to war. Our interest is in focusing on our own development and growth. But if you try and come and interrupt that story, we will give you a blow. And that's what Operation Sindoor did. So the signal is just that, resolve, nothing more. मैं हूं आयुषी गौड़ और न्यूज अपडेट के लिए बने रहें खबरनामा के साथ। नमस्कार।